सोच में सकारात्मकता लाएं, जीवन को बेहतर बनाएं। मनोदर्पण पर कॉल लगाएं, मनोबल अपना और बढ़ाएं। मनोदर्पण पर कॉल लगाएं, मनोबल अपना और बढ़ाएं। चलो आज ही प्रण ले हम, मानसिक स्वास्थ्य सुधारे हम। चलो आज ही प्रण ले हम, मानसिक स्वास्थ्य सुधारे हम। मनोदर्पण के काउंसलर से परामर्श पाने के लिए डायल करें टोल फ्री नंबर 844-844-0632। नंबर एक बार फिर सुने 844-844-0632। सोच में सकारात्मकता लाएं, जीवन को बेहतर बनाएं। मनोदर्पण पर कॉल लगाएं 844-844-0632। Namaskar and a very good evening to all. I'm Harpreet Kaur and I welcome everybody to our live and interactive session called Sahyog. You all know that Sahyog sessions are held under the beautiful initiative of Ministry of Education as a part of Atmanirbhar Bharat Abhiyan for providing psychosocial support to parents, teachers and of course students across the country. You are watching us on eVidya channels number 6 to 12 and also on our YouTube channel ncertofficial. So the topic that we have taken up today in Sahyog session is empowering adolescents to make effective decisions. It's a very relevant topic and we know how often adolescents struggle to actually make the right decision, but why it happens and how it can be treated, or I would say what can be done in this regard, is something that we are going to discuss in this particular session. So before I tell you about our phone numbers and our email ID, let me introduce you all to our experts for the session. We have with us Mr. B. Umesh Kumar Sharma. He is from NERIE Shillong. Welcome to the session, sir. Namaste, ma'am. Thank you. Namaste. We also have with us Dr. Rintu Bhuwan from Twensing, Nagaland, who is a practicing counselor. Welcome to the session, sir. Namaste, madam. Namaste. So, viewers, if you have any questions, if you want to connect with our experts, please feel free to do that. Take down our phone number, which is 8800440559. That's our phone number. And also, you can write to us on email ID for Sahyog, which is sahyog.ncert@ciet.nic.in. So, let me tell you the topic once again. This is empowering adolescents to make effective decisions. Now, I have a very basic question related to the topic. First of all, to Umesh sir. Sir, we're talking here about effective decision making. So, please tell us what exactly do we mean by that? Okay, ma'am. Thank you so much, ma'am, for having me in this forum. Thank you. And also, I appreciate for coming up with such an important and a very relevant topic for the adolescent. Yes. Actually, ma'am, हम बहुत बार डिसीजन तो लेते हैं जी, और जो खास करके जो हमारा स्टूडेंट जो है डिसीजन लेते हैं, कुछ कर लेते हैं, जो आउटकम जो नतीजा जो देखते हैं उनमें से बहुत सारा लोग खुश नहीं है, क्योंकि द प्रोसेस दे हैव फॉलोड इज नॉट एज पर द सिस्टमेटिक वे दैट वी आर सजेस्टिंग। इसमें इफेक्टिव कैसे होना है इसके बारे में if I have to say, I will be telling you in the simplest way. right. It's a kind of well-informed, considers relevant factors and its consequences, and also it aligns with established goals or values, जी, and it leads to a positive outcome. So कई बार जो outcome होता है positive आता नहीं है, इसीलिए बच्चे लोग frustrated भी हो जाते हैं। हाँ मैम। So, sir, do you think that critical thinking plays an important role in effective decision making? Yeah, absolutely. It plays a very important role in decision making. जी, क्योंकि ये देख लीजिए जब critical thinking के बारे में जब आ जाते हैं, तो not only in decision making, in many areas, this takes a very important role.
सो खास करके जो हमारा आज का विषय है इफेक्टिव डिसीजन मेकिंग, उसमें क्रिटिकल थिंकिंग का बहुत सारा एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। उसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं कि एबिलिटी टू एनालाइज द इंफॉर्मेशंस, इन एबिलिटी टू इवैल्यूएट द थिंग्स, और एबिलिटी टू सिंथेसाइज इंफॉर्मेशन टू मेक इन्फॉर्म एंड रीजन डिसीजंस। राइट सर, तो सर कैसे आपको थोड़ा हमें प्लीज एक्सप्लेन करें कैसे क्रिटिकल थिंकिंग डिसीजंस को इफेक्टिव बनाती है? हाँ, श्योर मैम। मैम, एक इफेक्टिव डिसीजन लेने के लिए हमको कई स्टेप्स हम फॉलो करना पड़ता है जी। सो राइट स्टार्ट फ्रॉम आइडेंटिफाई द चैलेंजेस। पूरा लास्ट में आ जाता है कि हमको क्या क्या ऑल्टरनेटिव्स रखना है हमारा जो डिसीजन लिया हुआ है उसके लिए जी। तो मैम जस्ट आई वुड लाइक टू explain this thing by using one example so that our viewer can be understand better. Sure sir. Yeah, तो एक स्टूडेंट है मान लीजिए, तो उसने ठान लिया है कि he should be in the top rank list in the next coming exam. ऐसा उसने डिसीजन ले लिया है। लेकिन ये डिसीजन लेना, टॉप रैंक पे आना, ये सब अच्छी बात है, लेकिन द काइंड ऑफ डिसीजन व्हाट ही इज टेकिंग, कौन सा बेसिस पे उसने डिसीजन लिए थे, ये पूछने वाला सवाल है। बिल्कुल। तो उसमें क्या होता है कि हवा में ऐसा सोच के हाँ हमको भी ऐसा होना है, हमको भी ऐसा होना है, ये सोच के ये डिसीजन भी लेते हैं। बाद में उसके रिजल्ट में आ जाता है कुछ भी नहीं, तो दुख हो जाता है, हाँ जी, डिमोटिवेट हो जाता है। तो फिर उसको इफेक्टिव लाने के लिए, मोटिवेट होने के लिए, उसका जो डिसीजन है उसको सही साबित करने के लिए हमको वी हैव टू फॉलो सम सर्टेन स्टेजेस जी। फर्स्ट में है कि उसका प्रॉब्लम, उसका चैलेंज क्या है, दैट वी हैव टू आइडेंटिफाई। सो उसको पहचाना। तो से सपोज इन दिस एग्जांपल दैट जस्ट नाउ आई हैव गिवन, इसमें कि उसका चैलेंज क्या है, द चैलेंज इज टू बी इंक्लूडेड इन द टॉप रैंक लिस्ट। जो भी टॉप रैंक लिस्ट में लाना है, ये उसका एक चैलेंज है। तो फिर why he is thinking and why he is aiming to be in the list of top ranker, इसमें आ जाता है कि I have to define it, I have to understand what is my challenge, what is my problem. At that time we have to think that before I used to score only 70 marks in the exam, now it is not like that, I have to focus on above 90. Otherwise इसमें हो जाता है कि कभी कभी हम ये डिसीजन ले लेते हैं और हम भी पता है कि हमको 90% से ऊपर मार्क्स लेना है, तो क्यों लेना है, हम अभी भी क्यों सोच रहे इसके बारे में। इसमें खुद को सवाल पूछना है, क्योंकि हम एग्जाम के समय हमने पढ़ाई कैसे किए थे, कौन सा टॉपिक हमने कितना टाइम दिया था, और कौन सा टेक्निक हमने यूज किए थे, और कौन सा समय पे हम इस्तेमाल किए थे पढ़ाई के लिए, और हम जो सीखे थे उसको याद करने के लिए हमने कौन सा तरीका हमने यूज किए थे, और उसके नतीजा क्या निकाला। मान लीजिए कि उसके एग्जाम हॉल का माहौल कैसा था जी, और एग्जाम हॉल में जाने के बाद हमको क्या महसूस हो रहे थे, हम क्या सोच रहे थे, और कैसे लिख पाते थे, ये सब जो है हर चीज हमको सवाल पूछ के हमारा सामने ला के रखना है। जो भी हो, इट इज नॉट कंपल्सरी दैट ऑल द थिंग्स हैज टू बी इन सीक्वेंस वाइज, बट इट इज नॉट कंपल्सरी। जो भी मन में आ जाता है, इट इज व्हिच इज रिलेवेंट टू द एग्जाम प्रिपरेशन, व्हिच इज रिलेवेंट टू द एग्जाम गिविंग, और सब कुछ ला के हमारे सामने रखना है। उसके बाद हमको देखना है कि हम एग्जाम में मार्क आसानी से क्यों मिल नहीं पा रहे हैं। हमने पढ़ाई तो किया था, आई हैव गिवन मोस्ट ऑफ माई टाइम फॉर स्टडी, ऐसा क्यों हो रहा है। तो उसमें हम जो सवाल पूछ के मेरा सामने जो रखे थे सब कुछ, उसमें कुछ ना कुछ लिंकेज मिल जाएगा। क्यों हमको मार्क्स नहीं मिला, हमको क्यों आसानी से जवाब दे नहीं पाए। तब वो सब देखने के बाद पता चला कि हम पढ़ाई तो किए थे, 4 घंटे या 5 घंटे हम बैठे थे मेरा टेबल पे, लेकिन फिर भी उसी समय पे मेरा दोस्तों लोग बाहर खेल रहा था, मैं तो गया ही नहीं, मैं तो रूम पे था, मेरा टेबल में बैठा रहा, मैं आई वाज विद माय बुक, आई वाज स्टडीइंग, बट स्टिल आई वाज हियरिंग माय फ्रेंड्स नॉइज जी। और वैसा भी
हमारा घर के अंदर मेरा फेवरेट गाना चल रहा है, मेरा कोई फेवरेट ब्रदर और सिस्टर वो लोग खेल रहा है, वो सब तो हम गया नहीं है, हम देखा भी नहीं है, फिर भी हम बेच रहे थे, फिर भी हम मार्क मिल नहीं पाए, क्योंकि उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमको यहाँ पे लेना है कि आई वॉज डिस्ट्रैक्टेड बिकॉज ऑफ ऑल दिस वेरियस फैक्टर्स। अपने ऐसा मिल गया, कुछ भी लीड मिल गया, तो देन उसको पकड़ना है, और दैट ओनली वी हैव टू प्लान फॉर द नेक्स्ट। हमारा जो नेक्स्ट टाइम जो हम पढ़ाई करेंगे तो किस तरह से हमको पढ़ाई करना है, क्या क्या चीज हम अवॉइड करना है, इसके बारे में हम आ जाएंगे। तो फिर सिर्फ अवॉइड करने से हो जाएगा क्या? नहीं होगा। अवॉइड करने से कुछ ना कुछ और दूसरा प्रॉब्लम आ सकता है, और वो प्रॉब्लम हमने प्रिवेंट कर ली है, उसके बाद फिर और भी आ सकता है। तो इसलिए सबसे जरूरी है अल्टरनेटिव्स रखना। अल्टरनेटिव्स प्लानिंग हम करना है, जो जैसा हम बोलते हैं ना, प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी, लाइक दैट। प्लान ए फेल हो गया तो प्लान बी इस्तेमाल करना है, प्लान बी फेल हो गया तो प्लान सी इस्तेमाल करना है। तो इसी समय जो हमारा जो अल्टरनेटिव्स है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इट इज टोटली डिपेंड ऑन द कंसिक्वेंसेस। राइट, हमने इस्तेमाल किए थे, उसके बाद कंसिक्वेंस में क्या मिला हमको, नतीजे क्या निकला, जो उसका प्रोस क्या था, उसका कॉन्स क्या था, यह सब हमको देखना चाहिए था। तो इस तरीके से हम क्रिटिकली, हम डीपली हमको एनालाइज करना है, और एक जो हमने जो अभी स्टेप जो आपको बोले थे सब फॉलो करके, एनालाइज करके लास्ट में एक फाइनल डिसीजन लेना है। या हमने जो पहला बोला था, आई वांट टू बी इन द टॉप रैंकर, इज इट पॉसिबल और नॉट? बिकॉज आई विल बी कमिंग टू नो दैट व्हाट इज माय स्ट्रेंथ, व्हाट इज माय वीकनेस। राइट। जो मेरा वीकनेस हमने पहचान लिया, हम कंट्रोल कर नहीं पाते थे। जब मेरा दोस्त लोग खेल रहे थे तब बार बार मेरा कान में वो सुन रहा था, हम कंट्रोल कर नहीं पाए थे, देयर इज माय वीकनेस। तो फिर हमको क्या करना चाहिए, और जो प्लान बी हमने जो रखे थे, प्लान बी कैसे इस्तेमाल करेंगे, और प्लान बी फेल होने के बाद भी हमको प्लान सी कैसे इस्तेमाल करना है, यह सब हम देखना है। फाइनली हम क्या सोचना है, साइंटिफिकली, सिस्टमेटिकली मैंने सब सोच लिया है, और मेरा वीकनेस क्या है, मेरा स्ट्रेंथ क्या है, मैंने पहचान लिया है। तो नेक्स्ट में हमको जाना है कि मेरा स्टडी का, मेरा एम का नतीजे क्या क्या होने वाला है। राइट। उसमें ज्यादा उम्र भी होना नहीं चाहिए और कम भी होना नहीं चाहिए। बाय नोइंग माय स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, आई शुड बी फोकस ओनली इन दैट लिमिट। दैट्स व्हाट आई कैन से। राइट सर, आपने बिल्कुल ठीक कहा। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि सेल्फ एनालिसिस किया जाए, इंट्रोस्पेक्शन किया जाए, और तभी आपके डिसीजंस इफेक्टिव हो सकते हैं। डॉक्टर रिंटू, मेरा आपसे एक क्वेश्चन है, व्हाट डू यू थिंक टू व्हाट एक्सटेंट the emotional intelligence or self-awareness actually influence the development of decision-making capabilities, effective decision-making capabilities among adolescents? क्या लगता है सर आपको? Okay, thank you, madam, for giving me the rare opportunity to speak in such a vibrant platform. जी. So, ma'am, there are practical skills or practical intelligence in every field, and may it be financial, commercial, technical, mechanical. So these skills or intelligence are abundant in all our world. Right. Yet humanity's greatest problems have not been reduced or lessened. So on the contrary, we can safely say that they have increased exponentially. Mm-hmm. It is due to the shortage of emotional intelligence. जी. So at present, ma'am, we should not focus on intelligent quotient. Rather, we should think about emotional quotient. हाँ जी. If the adolescents are not emotionally balanced, if they are not calm and composed, in the long run, they may suffer a lot. No doubt, they may be intelligent, they may be clever, but if they are not able to manage or control their emotions, and if they are not calm and composed, in the long run, they may not attain success and happiness. So therefore, this is the era of intelligent quotient or emotional intelligence. Right, sir. So emotional intelligence is of higher importance than intelligent quotient. जी. A person with intelligent
quotient is more adept, is more successful in understanding the fundamental conditions. It helps people to deal with rejections, failure, and powers them to fight back, to bounce back again. And in this way, emotional intelligence can help adolescents to attain success. So it was once said, never let success get to your head, never let failure get to your heart. This is the trademark of an emotionally intelligent person. So, ma'am, self-awareness and emotional intelligence both are the coins, both are the sides of the same coin, both are interrelated. Okay. So self-awareness means looking within and discovering oneself. So this is also one of the aim and objectives of education, that to discover oneself. So adolescents, they should be able to realize their potential, their strength and weakness, and only then they will be able to take the correct decision. So therefore, emotional calmness, then introspection, then looking within, these are the steps to attain inner peace, which is very much important in today's competitive world. Ji. So self-awareness means focusing attention on internal self-aspects such as thoughts, feelings, emotion, changes in mood, and external self-aspects like appearance. Right. So, okay, next, ma'am. So self-awareness gives realization of one's strength and weakness. So this is very much important for adolescents. They should realize in what areas they are expert or in what areas they can excel in. Otherwise, they will suffer in selecting the wrong avenue, wrong career options. True. So thank you, madam. Right, sir. So, you very rightly pointed out that it is very important to have emotional intelligence and self-awareness when it comes to taking decisions. You should be smart enough to do that. And now, Umesh sir, I want to know from you, how do you think that parents and teachers can actually play a very active role in supporting and encouraging, the students or their children, of course, adolescents in this case, to take effective decisions? How do you think? यस मैम, इसमें पेरेंट्स और टीचर्स का बहुत बड़ा भूमिका है. से एज अ टीचर क्लास में जो हाउ टू मेक अ इफेक्टिव डिसीजन सिखा जा सकता है. देन से एज अ रोल प्ले, जो सबसे बेहतर है कि टीचर शुड बी अ रोल मॉडल फॉर द स्टूडेंट, एंड इन दैट टीचर हैज टू बी taken some decision in front of the student. Ji. And so decision लेते वक्त, excuse me, decision लेते वक्त parent क्या करते हैं, teacher क्या करते हैं? Simply, I have to do this, I have to do this, I want to be like that. No, it should not be like that. So he said that I want to make this thing. He have taken a decision. Then क्यों लिया ऐसा? All the reason has to be explained by himself in front of the student. कि ये काम कर सकता है, मेरा रिक्वायरमेंट ये है, तो इसीलिए ये करना बहुत ज़रूरी है, और ये करने के बाद मुझको ऐसा आउटकम मिल सकता है, तो इसलिए मैं अभी सोचता हूँ ये करूँगा. तो इस तरीके से बोल के एक्सप्लेन करके इन फ्रंट ऑफ स्टूडेंट करना चाहिए, क्योंकि बच्चा जो है उसके सामने करेंगे तो देन इट विल बी अ गुड एक्सपीरियंस फॉर द लर्नर. देन he can replicate it with his own life. And also in the classroom भी ऐसा कर सकते हैं कि कोई भी एक्टिविटी आप ऑर्गेनाइज कर दीजिए, माने ग्रुप डिस्कशन हो या प्रॉब्लम सॉल्विंग हो, और कोई नहीं तो फिर कोई गेम प्ले हो, उसमें डिसीजन मेकिंग इन्वॉल्व हो, उसमें सारा रीजन डाला हो और सारा जो फैक्टर्स है, जो रिलेवेंट सोर्सेस है, वो उसको कैसे लाया जाए और किस तरह, हाउ टू एनालाइज दैट थिंग एंड हाउ टू फ्रेम, हाउ टू ब्रिंग अ फाइनल पिक्चर ऑफ द चैलेंज
and what are the expected outcomes from that. All these things we can make activity nicely, we can prompt by the teacher, and we can organize it in the classroom. And also we can have some give some assignment to the student also. Say, suppose you want to be like this in the future, then what could be your aim and what could be your course of action there? Give the reason and give the expected outcomes from that. And by chance, if you fail in that, and what are the alternative plans from your side? These things we can give. And also see, most of the time, whatever topic we are giving to the student should be realistic, should be happen in the practical situation. And say आजकल का टीचर क्या करते हैं, बच्चे लोग ओपनली बोल नहीं पाते उसके सामने. तो why we should give an opportunity to the student so that they can open up their mind. जो भी गलतियां कर रहे हैं करने दे, उसको बोलने का मौका दीजिए. गलती क्यों हो रहा है, कैसा हो रहा है, हम बताएंगे उसको, बोलने दीजिए उसको. और जो भी मदद मांग रहे हैं उसको मांगने का मौका भी देना चाहिए. और देखिए सबसे इम्पोर्टेंट थिंग, पेरेंट के साथ मिलकर कोलैबोरेट करना, ये बहुत इम्पोर्टेंट है. और पेरेंट भी घर में बहुत सारा चीज कर सकते हैं. उसमें क्या होता है कि बहुत सारा पेरेंट से बच्चों को कंट्रोल में रखते हैं. जो भी डिसीजन है बच्चे लोग नहीं लेते, पेरेंट ही लेते हैं. और पेरेंट बोलते हैं यू हैव टू इम्प्लीमेंट दिस, यू हैव टू डू लाइक दिस लाइक दिस. सो बच्चे लोग फेडअप हो जाता है, क्योंकि उसका अपना लाइफ है, अपना जीवन है, उसे खुद का डिसीजन लेना चाहते हैं. दे वांटेड टू टेस्ट द थिंग्स. अब अगर टेस्ट नहीं करेंगे तो हाउ दे लर्न इन देयर लाइफ? दे कैन नॉट डू एनीथिंग. तो टेस्ट करने दीजिए. टेस्ट करते वक्त वी हैव टू सुपरवाइज देयर, वी हैव टू सी, दूर से देखना है वो क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं. उसको एक्सपीरियंस होने दे. एक्सपीरियंस होने के बाद जो उसका जो नतीजा जो है उसके बारे में डिस्कस करेंगे. जो बच्चा है, आपने क्या किए थे और वो क्यों किया था, अभी आपको क्या मिल रहा है, तो आपको क्या होना चाहिए था, आपको फ्यूचर में क्या क्या होना चाहिए, ये सब डिस्कस करना है उसके बारे में भी. और जैसा कि पेरेंट्स जो है, कोई बच्चा तो बहुत ओपन है पेरेंट के साथ, कोई बच्चा तो ओपन भी नहीं है. हाँ जी. डर के जी रहे. Why we have to make them scared of the parent? Let the parent will be a friend. Let them open their mind so that they can open up everything and they can discuss anything with the parent. बिल्कुल. And देखिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज, जो भी हो, स्कूल में भी हो, घर में भी हो, या उसका फ्रेंड सर्कल में भी हो, उसने कुछ सोच करके, उसने कुछ एम रख के जो काम किए थे, उसका जो आउटकम है उसको लेके सेल्फ रिफ्लेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है जी. जो बच्चा खुद को बोलने दीजिए क्या क्या हो रहा है और क्या क्या गाइडेंस चाहिए और क्या क्या रिसोर्सेज चाहिए. those are the requirements that will be provided as a parent. So like this we can do so many things. So because of the shortage of time, I can share this much, ma'am. Thank you. थैंक यू सो मच सर. और क्योंकि टाइम बहुत कम रह गया है, तो डॉक्टर रिंटू, मैं आपसे कहूँगी कि बहुत जल्दी और बहुत ब्रीफ में बस आप ये बता दें कि ये जो डिजिटल लैंडस्केप चेंज हो रहा है, हाउ इट इज़ अफेक्टिंग द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस अमंग एडोलेसेंट्स, और इन चैलेंजेस को हम कैसे नेविगेट कर सकते हैं सर. काफ़ी ब्रीफ में सर प्लीज़ हमें बता दें. ओके मैम. सो डिजिटल लैंडस्केप मीन्स मैम द डिजिटल यूनिवर्स. It is made up of digital assets and channels. And the digital channels consist of email, websites, social networks, mobile devices, videos, and many more. So in the last 10 years, and particularly in the last 3 years, digital landscape or online world has changed dramatically. And thanks to the invention of social media, nowadays adolescents exchange ideas, feelings, personal information, videos at an amazing rate. So they exchange ideas, they chat with their friends, and in this way they are influenced by the digital world and to a greater extent. And sometimes it is seen that the youngsters, the adolescents, they are impressed by the online world of charm and glamour, and in the process they forget the difficulties, the problems they have to face in the real world. Okay. So these are the challenges, and for the parents and the educators, we have to be very friendly with the students, right, sir. And to make them realistic and to make them adjustable in real life situation.
we should talk about all the areas related to academics, co-curricular activities, then career, freely and frankly with the students, and to make them placid and tranquil, there should be some guided meditation, there should be some yoga, because digital landscape is an endless world of information where students can learn, develop and watch easily. So therefore, it should be strictly monitored by parents and guardians at home and by the teachers in the school. Right. And there should be some library hours, fixed library hours every day for the students, because many a times the information that is found in the digital world, it is sometimes not authentic. So it is to be verified by taking proper reference to books, by contacting parents, teachers. So in this present competitive world, no one can detach himself from digital world, but yet the time has come to look within. That is, the introspection is required, Yes. and students are required to know themselves. They should be able to discover their real potentialities, and parents and teachers should discuss with them for maximum times. There should be some interaction section, and as Umesha has rightly said, students should be given sufficient opportunity to speak them up. Only then they will be able to receive new ideas. Right, sir. Thank you, ma'am. Thank you so much, sir. Thank you so much for explaining it so nicely. I would like to thank Dr. Rintu and Umesh, sir, for their valuable contribution to this session. It was indeed a very fruitful discussion. Because of lack of time, we couldn't continue, but I hope that whatever points we discussed during the session will prove beneficial for you. You will adhere to them, and as I say that parents and teachers definitely play a very important role in the life of adolescents. Yes, in the adolescent stage, it is very important to cater to their needs and requirements so that they can take effective decisions in their life. With this, it's a wrap. This is me, Harpreet Kaur, taking leave of you. But before I wind up, here is an important update regarding NCERT textbooks. These textbooks are available across the country, which you can purchase both online and offline. Also, you can definitely download the soft copies and the PDF versions of these textbooks from NCERT website, Diksha app and ePathshala. Once again, I would like to thank both the experts for their contribution. Thank you so much for being with us. And this is me, Harpreet Kaur, taking leave of you from these live sessions. Till we meet next. Namaskar. Okay, namaskar. सोच में सकारात्मकता लाएं, जीवन को बेहतर बनाएं। मनोदर्पण पर कॉल लगाएं, मनोबल अपना और बढ़ाएं। मनोदर्पण पर कॉल लगाएं, मनोबल अपना और बढ़ाएं। चलो आज ही प्रण ले हम, मानसिक स्वास्थ्य सुधारे हम। चलो आज ही प्रण ले हम, मानसिक स्वास्थ्य सुधारे हम। मनोदर्पण के काउंसलर से परामर्श पाने के लिए डायल करें टोल फ्री नंबर 844-844-0632। नंबर एक बार फिर सुने 844-844-0632।